Hi, ma'am. Good evening. Yeah, hi. Robin, can we see your video? Yeah, I can see. Yeah, I can Okay. see you. And can we ask our viewers whether they can see you? Can we have some comment in the comment box? Can someone tell like we are visible, audible, everything? I am it, sir. If you can comment, if you can confirm whether we both of us are audible or not, visible or not. Rishabh, hi. Maybe Shavan can confirm from the other phone. Audible. Thanks. Thanks, Amit, Audible. sir. Yeah. Someone at least respond. It's just been 5 minutes more, Robin. Yeah, sure. Absolutely, Yeah, ma'am. I think people are joining in. So let's wait for 5 more minutes. Till the time, I think it's Friday evening and it's more or less, people should be done with their work and all. Hope to add some Correct. value to this, their Friday evenings. Correct. Some serious money conversations are going to happen right now. It's more of wealth creation and aspects around that. So yeah. Most of the time when, Insta is used just to, कि क्या story आया है, let's see what is there new. But I hope this conversation is going to be a little meaningful. Absolutely. We'll try so. Yeah. We'll definitely So try so. Yeah. maybe 5 more minutes and sharp in 5 minutes we're going to start this. But it is so easy to go, right? Wherever you are, you just have to log in. And otherwise, you have to say, Zoom pe karna hai, link chahiye. But I think Insta is one of the best way in such social media platforms. Absolutely. Hi, And for Mark. you, young generation, I think this is the best. So I'm also young at heart. Absolutely, always. You have more energy than us. let's, I've seen let's how see. you work, Let and me start the conversation. And I'm really so excited because we are too extreme in the kind of the kind of thought and the age bracket. So let's see. I think more and more are joining, but yes, we want more and more people to join. So hmm. I guess we can start off. And I Yeah, believe this video will let's again be there on introduce. your Yes, Insta. yes, Yeah, yeah. Okay, fine. Let people will come, keep on coming and going. But by the meantime, जो है, let's start because otherwise unka time is valuable. So value that and let's start this. So guys, welcome to the ultimate showdown of two minds, one stage, where we are going to decode the investing philosophy. There are two people of extreme, but yet this conversation is going to have a lot of opinion conflict, and at the same time, the goal being one. So I am Vinita Kejriwal, who is a chartered accountant, certified financial planner, but at the same time, I am also a seasoned investor. And at the other end, I have Robin, who is working with DSP Mutual Fund, but also an investor who is into this tech savvy kind of generation using the technology to the extreme. And we are going to have this conversation where we are going to have a meaningful structure to the investing. So starting with Robin, I want to ask you, can you share your
investment journey, because most of the time what happens कि हम बात करते हैं लेकिन जब हम अपनी experience को share करते हैं तो that gives a different perspective. So tell me, how did you started investing? What have you been doing? कैसे आपने investment की journey को कहाँ से शुरू किया? So share your own experience. Yeah, sure, absolutely. So I started, this happened with me. My investment journey started in the year 2017. So I was a student, I was doing my undergraduation, and I was pursuing chartered accountancy. So जब CA के classes में जाते थे, so yeah, I am also a CA, but I tried half CA हूँ मैं. So CA की तैयारी कर रहा था. During my classes, I got interested in the stock markets. तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी जर्नी जो चालू करनी थी, तो आई थॉट ऑफ हाउ डू आई एग्जीक्यूट दिस. तो मुझे स्टॉक्स का ज्यादा आइडिया नहीं था. आई वाज वेरी नाइव विद बैलेंस शीट्स एंड ऑल, जस्ट एक स्टार्टिंग फेज था. सो व्हाट द वेरी फर्स्ट स्टेप आई टुक वाज, मैंने एक फाइनेंशियल एडवाइजर को ढूंढा. राइट, आई सीक्ड फॉर प्रोफेशनल हेल्प एंड आई स्टार्टेड माय वेरी फर्स्ट एसआईपी in the year 2017. So I remember कि लोग generally अपनी first girlfriend, अपनी first SIP और अपनी first stock, right, and अपनी first job कभी भूलते नहीं है. So my first investment was through SIPs. I started a 1000 SIP back in my college days, and I'm proud to say that it is still continuing. So 2017 की वो investment थी, and मैंने उस journey को continue किया, and that's when my journey started. And now obviously I have added up more on my investment space after going through this market cycle in the last few years, and I've added more to it. Okay. Yeah. So ma'am, आपका journey कब चालू हुआ? So I'm more interested in that. Right, आप तो seasoned investor हो, so I also want to know your journey, and I guess it will be very valuable for our audience as well. Yeah. So, like rightly you said, you never forget your first SIP, first investment, first job, या आपका first जो हर चीज होता है, first love. So equally, I also remember how I started. So I started my career in 2005, almost 20 years back. When I started my job with HDFC Mutual Fund, I still remember मेरी salary थी 7,500 रुपए की. 7,500, because you said ना कि you never forget your first salary. Maybe आप अपनी upscaling को भूल जाते हो in between कितने आपको promotion मिला, but आप first salary नहीं भूलते. उस फर्स्ट सैलरी से भी मैंने 500 रुपीज की एसआईपी स्टार्ट की थी. आई स्टिल रिमेम्बर 500. व्हाई? बिकॉज उस टाइम एक ईएलएसएस स्कीम होता था जो आज भी है, टैक्स सेवर टाइप. तो 500 आपके सिर्फ टैक्स सेवर स्कीम में ही मिनिमम अमाउंट था, बाकी सब जगह 1000 रुपीज था, और आज की 100 हो गया है. बट 20 years बैक इट वॉज ओनली इन दी ईएलएसएस स्कीम. सो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट एसआईपी 500 रुपए की इन ईएलएसएस स्कीम व्हेन माई सैलरी वॉज 7,500. बट ऑफकोर्स जब आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है, ये आपके डिसिप्लिन के बारे में है, राइट? तो वो मेरे अंदर बचपन से ही था, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ वेरी मॉडेस्ट फैमिली जहां पे दी वैल्यू ऑफ मनी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई स्टार्टेड, जैसे ही मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड एसआईपी. एट द सेम टाइम जैसे मुझे एक प्रमोशन या मेरी अर्निंग में एक अपस्केल मिलता रहा, आई केप्ट ऑन एडिंग टू माई इन्वेस्टमेंट एज वेल. सो वो बोलते हैं ना आज के दिन में टॉपअप करते रहना. सो आई डिड ऑलवेज, एवरी ईयर आई डिड दैट. So fortunately, 20 years of compounding has paid me off very well. Super. Yeah. So going forward, Robin, I wanted to ask, बहुत सारी challenges है आज के दिन में, but we'll stick to more or less 3-4 challenges, and we are going to burst this out. ये 4-5 challenges को हम लोग लेकर चलते हैं. So पहला मेरा challenge to you, the question is कि किस तरह से जो आज ये टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी पर आप लोग की जो जनरेशन है वो कितना उन पे डिपेंडेंट है, और ये टेक्नोलॉजी आप लोग को कितनी रिलायबल लगती है? राइट. सो एज अ जेन ज़ी इन्वेस्टर यू कैन से, जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, सो ऑब्वियसली आई वांट एवरीथिंग ऑन माय फिंगर टिप्स, right, from booking my flights to my movie tickets and anything and everything, right? So it, right, how Blinkit and Zepto has again transformed things, right? Zomato, Swiggy already chal raha hai. So we want everything quick, and plus if I have to say this, that technology का role क्या रहा है in my investment space, it brings me more transparency and reliability, right? For example, if I have to view what is there in my mutual funds, right, with one click I can get all the portfolio details. कहाँ पे कितने रुपए लगे हुए हैं, 100 रुपए में से 5 रुपए अगर एनटीपीसी जैसी कंपनी में लगी हुई है, so वो म्यूचुअल फंड का सारा इंसाइट मुझे मिलता है. Apart from that, from these details, I get an overview also on a daily basis,
कि मेरे पोर्टफोलियो का क्या स्टेटस है. इफ आई एम इन्वेस्टेड अक्रॉस एसेट क्लासेस, आई गेट अ समराइज्ड व्यू ओवर देयर. सो टेक्नोलॉजी ओवरऑल is making my life much more easier in terms of investing. जैसे अभी रिसेंटली हमने हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहे थे, एंड आई वांटेड टू इन्वेस्ट थ्रू यू. सो जस्ट एक सिंगल लिंक आपके थ्रू आया एंड आई इन्वेस्टेड थ्रू इट. सो इट वाज दैट क्विक, दैट 30 seconds it took to invest, to add more in my investment journey, right, which will eventually help create wealth. So वहां पे these things play a important role, and मुझे लगता है technology is much more making my life easier. Got it. जो आप लोग जोमेटो स्विगी वाले, आप जेंसी, ये न्यू एज इन्वेस्टर्स है, for them technology is actually playing this disruption and transformation in the investing pattern, right? Correct. So as you were saying, during your wealth creation journey, when you started your SIPs, so that time obviously there was lack of smartphone penetration or internet per se. So how did you invest back in those days, and what was the role of technology that time? Yes, 20 years back we still remember किस तरह से हम लोग ने, हमारा सब कुछ ही फिजिकल में होता था, starting from form collection, KYC, bank, checks, everything. But 20 years later when we are talking now, तो आज के दिन में people will tell कि जैसे होता है ना कि you're into old age, या आप लोग का age जब I'm not talking about specifically me, but if you're talking about a generation gap, तो वहां पे होता है कि online को आप platform को कितना importance देते हैं and how much are you adaptable. So basically when I come across investors, different set of people are there, so these people are actually really very adaptable and they are very flexible. पहले उनको बैंक ट्रांसफर, नेट बैंकिंग ये करने में भी थोड़ा सा एक हेजिटेशन या स्केप्टिज्म होता था, बट आज के दिन में एवरीथिंग दे वांट टू डू इट ऑनलाइन. इवन माय 60+ इन्वेस्टर वाले भी है ना, उनको लगता है कि वी डोंट वांट एनीथिंग इन फिजिकल. सो इवन our generation people, yeah, the other age people are also taking this ये technology का the best use. जो 20 years back, even if you say last 10-15 years back, which was not there. So सब चीजें जहाँ physical होती थी, आज के दिन में technology has really played a very, very important role. And I mean, going forward also we are seeing this. So I think this is very important. So I guess more people adapting towards technology, it's better for them as well. Correct. So that वो ज्यादा ऐड कर पाए, एंड स्पेशली व्हेन आज के मार्केट, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो मार्केट गिरा हुआ है, एंड आई वांट टू ऐड राइट नाउ एंड टेक द बेनिफिट ऑफ अ फॉलन NAV. सो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी हेल्प्स कि मुझे वेट नहीं करना पड़ रहा है 3 दिन चेक क्लियरिंग के लिए. बिल्कुल, वैसे. सो नाउ टेल मी वन थिंग, लाइक हम जब रिस्क एपेटाइट की बात करते हैं, सो यू यंग पीपल, हाउ डू यू क्वांटिफाई और इवैल्यूएट द रिस्क? I mean, it is only you believe on the data, or it is only your instinct कि हाँ यार मेरे दिल ने कहा है या मेरे दोस्तों ने कहा है तो मुझे इसी में करना है, या you people actually do some data mining? आप अपने रिस्क को कैसे क्वांटिफाई या कैसे एनालाइज करते हो? राइट. सो फॉर मी रिस्क इज वेरी मच क्लियर कि मुझे जनरली जो मैं स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करता हूँ, इट्स मोर ऑफ अ गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग. So each of my investments are earmarked to a goal. But still, if I have to say that कि risk क्या है मेरे लिए, so risk is more of a data driven. Gut कभी भी खराब हो सकता है. So I'm not going on the gut या कोई मुझे thoughts आ रहे हैं कि this much should be my risk appetite, right? Generally, I decide कि मेरा time horizon क्या है of investments, and accordingly I place my investments as per my time frame. And risk is more or less a data for me. अगर मुझे लगता है कि कोई एसेट क्लास में 10% 15% का डाउनफॉल है, एंड आई एम कंफर्टेबल विद दैट, राइट, कि आने 1 साल 2 साल में मैं उस 10% के फॉल को, 15% के फॉल को अपने पोर्टफोलियो में देख सकता हूँ, एंड आई कैन बेयर इट, देन आई विल डेफिनेटली गो अहेड एंड इन्वेस्ट माय मनी इन दैट एसेट क्लास. अदरवाइज आई विल स्किप इट बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑप्शंस राइट नाउ. सो रिस्क फॉर मी इज मोर और लेस इट्स अ डेटा. Okay. So for you, data is more important than anything else. मतलब आप डेटा को पूरा इंपॉर्टेंस देते हैं. You do your own data mining and data analysis. Absolutely. Very good. Very good. Absolutely. Right. So if I have to talk risk, आप risk को कैसे देखते हैं? What's your perspective on it? And especially people, since आपके साथ बहुत veteran investors भी जुड़ चुके हैं and उन्होंने अपनी जर्नी आपके थ्रू की है for that wealth creation. So क्या risk appetite बढ़ता है लोगों का, घटता है? Generally हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी में कि with age
the risk appetite actually comes down. So is it true or is it very subjective? So what is it? So very good question. You know, this is rightly said that कि जब आप aging होते हो या you're in your second age or phase of the life, तो आपको उन asset classes में करना चाहिए जहां पर risk कम है, तो आप थोड़े risk averse हो जाते हो, right? But I'll tell you honestly, Robin, आप ये जो market है या जो ये economy इतनी dynamic रही है, and I've experienced this since 20 years of my overall experience, and I come across lot of different kind of individuals. तो मुझे लगता है ये risk बहुत subjective चीज है. I mean, even if I talk to a 70-year-old lady, and it's actually the fact. So that lady, she came to my office and we were just talking. तो मुझे लगा अब she is into almost what retirement phase. अब उनको investment planning के लिए she should go more into debt of every class of product, right? Because उनका एक अब age of phase आ गया है जहाँ risk कम होना चाहिए. But that lady, she actually wanted to put it into equity because उसने कहा कि even if I am there for next 3 years या 5 years, तो जो मुझे कंपाउंडिंग का बेनिफिट चाहिए जो मैं इतने साल तक नहीं बना पाई बिकॉज सम ऑफ द अदर रीजन या उनके पास सही गाइडेंस नहीं रहा था या उस टाइम वो रिस्क नहीं ले पा रही थी बिकॉज ऑफ द अदर रीजन और उस समय आज से 15-20 साल ये जो एसेट इक्विटी का हम बात कर रहे हैं वो उतना एक्सेप्टेड भी नहीं था सो उसके कारण जो आज हम जब बात करें ना इस एज क्लास ऑफ पीपल की तो दे आर यू नो गोइंग वन नॉच अप और यू नो मोर एंड दे आर इंक्रीजिंग their risk appetite and they are you know ready to take hum kai baar as a planner we hold this feedback ki please don't take this much of risk but they don't want actually ki hum fir bhi still because hamara kaam inko sahi guidance dena so still we try and we try to convince and tell them ki aapko apne ek risk ko samajh bujh kar karna hai so I think it is really very subjective to ye aap kisi ko bhi define karke nahi bata sakte right so I guess this perspective is very interesting. हमारे viewers को भी ये चीज जानना चाहिए because ultimately everyone is an investor. And एक investor को ये चीज हमेशा समझनी चाहिए कि risk, for example, जैसे आपने बोला right, your investor 70 years old, right, and equity उनका preference है. So उनके पास surplus corpus बढ़ गया, उनके पास disposable income बढ़ गई over the years. So they have surplus money, उनका normal lifestyle continued है, and with the surplus money they can take more risk. And you know increase their capital even more वो generational wealth पर pass on करने की बातें आ जाती है so yes a great perspective on the risk so tell me one thing Robin ये जो आप लोग की generation वाले लोग हैं so what kind of you know basic error in investing they make in their early years what is one mistake या error बोल दो या जो आपके age bracket वाले लोग generally करते हैं maybe you can share this जिससे कि जो बाकी व्यूअर्स है या जिनसे भी ये शेयर हो रहा है मे बी दे विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक तो आप अपनी एक्सपीरियंस से बताइए कि आपकी लाइफ में क्या एक इन्वेस्टिंग मिस्टेक एरर रहा है राइट सो आई फील अगर मिस्टेक्स की बात किया जाए तो मेरा यही मानना है कि rather than doing the mistake yourself always learn from others mistake that is one thing which you can do which can save you a lot of time and in the financial markets a lot of money राइट सो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा पर्सनल मानना ये है कि कभी भी कोई ऐसी जगह पे पैसे नहीं लगाने चाहिए जिसकी समझ आपको ना हो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लेता हूँ 2017-2018 एक जवान लड़का स्टॉक मार्केट में आया राइट एवरीवन वांट्स टू मेक मनी क्विक नाउ उस समय चल रहा था काफी इंटरेस्टिंगली एसआईपी तो चल ही रही थी खैर व्हाट वाज समथिंग हॉट इन द मार्केट वाज क्रिप्टो करेंसी So Bitcoin and cryptocurrency, I was in fact, I started very early. I saw Bitcoin at $1,000. So I was very intrigued by the returns which Bitcoin was offering. So I also decided along with my friends कि हमें भी ना crypto में invest करना चाहिए. And while looking at crypto, we also saw different coins offering us 1% return every day. And we were like, okay, 90 days, 100 days में हमारा capital आ जाएगा. And then we are free and वो पैसे से फिर हम लोग return बनाएंगे. But ऐसा हुआ नहीं. After 10 to 15 days, the coin vanished altogether. It was a Ponzi scheme. So learning ये थी अच्छा है उस समय. I started young. I did this particular mistake, and because crypto was very new, so there was obviously less professionals also to guide us. But yeah, it was one mistake which I did, and the learning, the outcome is कि ऐसी जगह पे पैसे ही नहीं लगाना है मुझे जहां पे मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है नॉलेज नहीं है बिल्कुल बिल्कुल सही बात
तो आप लोग की जनरेशन में जो होती है ना, यू नीड एक्साइटमेंट एंड थ्रिल इन एवरीथिंग, वो चाहे बिजनेस में भी हो, तो आई थिंक यू नीड दैट एक्साइटमेंट. बोरिंग चीजें अच्छी नहीं लगती, यू पीपल गेट बोर्ड very soon and very quick. So I think that is also one part which I have also realized being with, different set of people. So that's Right. one thing, right? So, ma'am, but you have such veteran investors. So this thing comes up in my mind ki seasoned investors, veteran investors, do they make mistakes with managing their money? Kya after so many years of experience with so many business cycles, industry cycles and market cycles के बाद जाने के बाद क्या वो भी गलतियां करते हैं? देखो, मिस्टेक तो बना ही है मिस्टेक करने के लिए, बट आई टेल यू व्हाट इज द बेसिक मिस्टेक जो कि इन्वेस्टिंग में एज ए इन्वेस्टर everyone is doing, including me or including everyone, which is people don't have patience. They want everything in short term. हम इतने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट ने इतना रिटर्न दिया या इसने इतना स्कीम ने रिटर्न दिया, बट हम सारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न बोल रहे हैं, इन्वेस्टर रिटर्न नहीं है. सो मैंने ये हमेशा गैप देखा है. एंड एवरी टाइम व्हाट हैपेंस कि रिटर्न, एंड इट इज ऑलवेज पोस्टमार्टम इफेक्ट. हर एक साइकिल आती है, मार्केट इज सिक्लिकल, राइट? हम जब इक्विटी की बात करें या कोई भी एसेट क्लास विच नीड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जिसे एक पेशेंस चाहिए, तो वो हम ना एज अ बेसिक ही भूल जाते हैं. सो सिंपल इन्वेस्टिंग को वी मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. वी गेट इनटू टेक्निकल्स, बाकी नॉइजेस, बट जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते. सो आई थिंक ऑलवेज विच प्लेज द रूल आउट, आई मीन आपके इन्वेस्टिंग में, इज योर बिहेवियर. जो आई थिंक विथ ऑल एक्सपीरियंस हम बात करते हैं, बट अगले साइकिल में या अगली बार जब कोई डाउनटर्न आता है, यू गेट इनटू अ डिफरेंट जोन ऑफ इन्वेस्टिंग. सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, बट ये मिस्टेक हमेशा होता ही है. राइट, सो ब्यूटीफुली सेड मैम. सो मेरे लिए टेक अवे ये रहेगा आपकी बातों से कि इन्वेस्टर रिटर्न वर्सेस इन्वेस्टमेंट रिटर्न, देयर इज ऑलवेज अ गैप, राइट? फंड ने तो पैसा बना दिया, बट अल्टीमेटली मेरे पोर्टफोलियो में वो रिटर्न दिखा नहीं मुझे. एंड दिस गैप, माय फ्रेंड्स, आई गेस इज द रीजन बिकॉज ऑफ द बिहेवियर गैप. हम सब में कहीं ना कहीं बिहेवियर गैप है. मार्केट गिर गया, हम डर जाते हैं, राइट? सो वी डोंट हैव टू डू दैट. इनफैक्ट फॉलिंग मार्केट्स में इट्स ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट मोर. Tell me one thing, Robin. Almost this is my last kind of a challenge which I face. कि आपकी जनरेशन में या when I'm talking to you kind set of people, तो कुछ investments are always very overrated. I mean you people will be having that mentality कि नहीं यही सब कुछ है, इसी में ही हमें सब कुछ करना है. So what asset class या what is that investment philosophy या ऐसा क्या है जो कि आप लोग के लिए बहुत overrated है? So something which is overrated, something hyped right now, what I feel is, and ये कुछ टाइम से ही चल रहा है, I have seen the FNO frenzy. सभी को फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है, सभी को वो 10,000 15,000 के कैपिटल से 1 लाख बनाना है इन वन सिंगल ट्रेड, राइट? बट व्हाट पीपल फॉरगेट अबाउट इज दैट वो सीखना नहीं चाहते हैं. हर एक प्रोफेशन में देयर इज अ डिग्री टू डू इट, राइट? डॉक्टर्स नीड टू गिव देयर इयर्स, हार्ड वर्क, पेशेंस, ब्लड, स्वेट, एवरीथिंग, एंड देन रीच दैट स्टेज, राइट? वो प्रैक्टिस करते चीजों को, राइट? सिमिलरली फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सो फॉर एवरी प्रोफेशनल थिंग यू नीड अ course, right? You need a knowledge, clear certification, right? Knowledge, and you need to put in those hours. But investing is, you just have to open a 5-minute account. 5 मिनट में आपका अकाउंट बन जाता है, आप ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं, राइट? ये प्रो है और कौन भी है इसका. So a lot of people, a lot of youth, and which they are doing is they are doing wrong, is putting a lot of money and burning it in the FNO space. बिल्कुल. Right. अभी रिसेंटली हमने देखा कि SME IPOs का क्रेज था. पीपल आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द IPO स्पेस एज वेल विदाउट नोइंग दैट. फॉर एग्जांपल एक शोरूम डीलर था, यामाहा का, आई गेस सम कंपनीज. दिस शोरूम डीलर वाज देयर वेयर ओनली 8 एम्प्लॉयज वर देयर एंड दे रेज रफली अराउंड 40,000 crores ऑड फिगर. सो पॉइंट बीइंग कि आप जानो चीजों को, आप समझो, यू स्पेंड टाइम लर्निंग थिंग्स, you invest in your knowledge first and then invest in the markets or something where you can actually make wealth. But 90% of the people are losing money in the FNO. That's the sad reality, and more people are jumping into it. But yeah, that's how it is. So something they should avoid is FNO. So to sum up, I wanted to also share one data to it. You rightly said that, see, the highest number of Demat account has been opened throughout since COVID now, right? But when you see, people only see कि, they see the good things. कि हाँ, इसने पैसा
है उसने पैसा बनाया, but data says that 99% people lose money in F&O. 99%. It's hardly a percent maybe which who makes money. That is also very difficult. So I can only say one thing to the people who are listening, ki yes, you can make money, but there's no shortcut to it. There's no shortcut. So you have to have that mindset, mind frame to your investment philosophy. Otherwise, Rome wasn't built overnight. वैसे आपकी investment journey takes time. So to build wealth, you have to have that patience. Absolutely. In fact, Warren Buffett say when Jeff Bezos met Warren Buffett, so उन्होंने पूछा कि Warren Buffett, you have your entire portfolio disclosed online, and you have made so much wealth. क्यों लोग आपको copy करके, you know, why they are not able to make the similar amount of wealth, right? What you have generated. तो Warren Buffett ने simply उनको यही चीज बोला कि people don't have patience, right? लोग मेरा return देखते हैं. But for that, I gave my 60 years of compounding to it, right? He gave it 60 years. Compounding ने उनके लिए काम किया, and that's how he created that wealth. So people can comment in the comment box at what age, Warren Buffett started investing. Right after. Yes, there is a surprise for them. Yes, they can comment and they can have their some, interactive thing. You can just put it in the comment box कि किस age पे उन्होंने अपनी investing journey को start किया था. So rightly said that needs patience and long time of investing journey. True. Right. So just one question from my end, I guess probably we'll end after this and we'll open for Q&A. So what's one outdated investment that you think that the older generation should let go? Okay. Robin, when you keep on asking older generation, I'm really feeling very older here. But the thing being more of, two minds, because every mind, every kind of, kind of people whom we represent, ये क्या बोलते हैं, कुटुंब, तो उस community. So I think they have some representatives. So I'm maybe representing them. Absolutely. Right? So you're very much young at heart. So like you said, old fact. Exactly. So when I come across again the investors, सबसे ज़्यादा उनको क्या लगता है पता है, the old fashion है या old thought है. Again, it is very subjective. But people want their investment, everything to be seen. They don't like anything intangible. So more or less the favorite coming real estate, gold. उनको वो दिखता है वही उनको अच्छा लगता है. Be it return terms, it hasn't delivered anything. Some superficial because maybe equity as an asset class वो बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न दिया है, but क्योंकि वो आपको दिखता नहीं है ना, तो आज भी it's hardly only 4 to 5% of people who are investing in equity, which has all sub asset class को outbeaten किया है. So majorly 50 to 60% people are investing in real estate, gold में another percentages. तो I mean what I mean to say कि ये होता है कि आप physicalization assets या financialization में आइए, and the shift is actually taking. But that might take some time. Still, this thought is there. When I meet and ये awareness जो create हो रहा है ना, उसके कारण this change in their mind is coming actually. Right. Rightly said, ma'am. Change is the only constant, and I guess markets से ज़्यादा और कोई ये चीज को proof नहीं कर सकता है. Exactly. Because everything is so dynamic. आप अपने पुराने old fashioned thought से ही relevant नहीं रह सकेंगे. You want everything updated, आपका wardrobe updated होना चाहिए, आप खुद updated है, but अब जब investment की बात करते हैं, you are still having that old school of thought, old conventions, and वही physical assets you want. Whether it is yielding, आपके inflation को beat कर रहा है, नहीं कर रहा है, but you're happy seeing that asset. So I think you should come out of that mindset and start growing your wealth. So I think now what we'll do, Robin, since we have few minutes, if anyone has any question, if they want us to answer out of this conversation, if you want our journey to be shared more, like you want to, we can open for that. You can just put it in the comment box so that, in case if we are able to answer some of them, some questions. So I think if जब question नहीं होता है तब भी it is a danger. If there is a question, then also. I mean, we are open to both. I'm just waiting if they want to ask something. So I guess audience को सब कुछ समझ आ गया है. Yeah. Right. So
What It's an not about the incredible questions right now. discussion. Maybe definitely, since this particular session is uploaded, so again you will get more questions on it. But just it's my question कि अगर मैं बड़ा सोच रहा हूँ, if I want to create wealth, right? And ये मेरा personal है. I want to ask this question कि मुझे 100 करोड़ बनाने हैं, 100 crores at the time when I retire, or at the time एक certain age, at time when I'm at 55, I want 100 crores in my portfolio. What should be the approach toward it right now? आज मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कि वो 100 करोड़ का जर्नी मेरा चालू हो जाए? Correct. See, we'll again come to the basics of investing only. So there are 2-3 things which is really very important. एक तो है start early. So whenever you are starting your earning journey, start investing. अब उसमें भी what portion are you going to invest? That will make a difference. So, and most of the time people just save, they don't invest. So there's always again a difference between saving and investing. So try to create a budget, and rather than spending and जो बचता है उसके बाद invest करने से, first invest up from your income and then try to spend. Have less EMI. Even if you have any goal होता है इस age में, we want to buy home, we want to travel. So for that also start one SIP, right? उससे जो आप wealth create करेंगे, maybe 50-60% or 40%, whatever, don't take that stress, but stretch it out. जितना हम डालेंगे उतनी आपकी जर्नी में आपका वो ग्रो करेगा वेल्थ. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल से कि लेट मी सी, मैं 5 साल देखता हूँ ये कैसे परफॉर्म करता है, फिर बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू मिस दैट 5 years ऑफ कंपाउंडिंग. अगर आपके पास 40 years है या 20 जो भी ईयर है, आपने वो 5 साल उसका मिस कर दिया है. तो ट्राई टू पुट एज मच एज यू कैन आज से ही. तो आप अपनी इन्वेस्टिंग, आप अपने रिटायरमेंट गोल के लिए, वट एवर यू हैव अ गोल इन योर माइंड, यू विल रीच देयर. क्योंकि बिकॉज अगेन सबकी अर्निंग इज डिफरेंट, राइट? सो आई कांट मेंशन द अमाउंट ओवर हियर, बट येट आप अपने उसमें से परसेंटेज को एटलीस्ट फिक्स कर सकते हो कि हाँ, आई वांट टू पुट 50-60% इनटू द इन्वेस्टिंग. Yeah. So, but what an incredible discussion we had, and it was really so fun talking to you and the kind of, I mean, the other side, like our ये जो हमारा पूरा ही एक context था कि two mind in one stage. So the minds are different, but at the end, let me tell you कि अगर I'm even a old-fashioned investor हो, कोई यार digitally enthusiastic हो, but philosophy and approach investing is very simple. It is like you have to keep patience. Patience will pay off at the end. So have patience and remain invested. Right. Really greatly said, ma'am. Patience is the virtue one should have while investing. And thank you so much for inviting me, letting me join this show of yours. Two minds, one goal. And I And guess that goal. for us also one message: ki don't fear with this new tools or any such kind of any such digitalization, because that's at the end going to add only. So don't ever get feared. Be adaptable, be flexible, and be a learner investor, because there is always a scope to learn. There is no end to learning. So don't think कि ये नई चीजें आई तो इनको हम कैसे हमारे लिए relevant होगी. You will learn it over a period of time. So if you like this conversation, अगर आपको अच्छा लगा है तो please do put in the comment box, and stay tuned. We'll be coming with a lot of such kind of exciting discussions and meaningful conversation which can add value to it. And until next time, dream big, invest as much as you can, and you'll have a good retirement at the end. Thank you so much. Thank you, ma'am. Yeah.